राधा स्वामी संत बाबू स्वामी महाराज के बारे महिमा शब्द स्वरूप राधा स्वामी के दून सुन कर मन समझाई, दून सुन कर मन समझाई। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swamiji Maharaj. स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि धुन सुनकर मन समझाए, क्योंकि लोग अपने मन को बस में करने के लिए ही, मन को मनाने के लिए ही कोई तीर्थ, व्रत, उपवास और कोई जंगलों पहाड़ों में जाके कठिन तपस्या करते हैं। Swamiji Maharaj says that with the sound current, one can explain to the mind. Everyone tries to control the mind and does different practices. Some do austerities, others do fasting, some go to pilgrimages, and they do various practices to try to gain control on the mind. कुछ लोग जप तप और कठिन आसन योग और प्राणायाम कठिन साधन करके भी मन को बस में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मन बस में नहीं है। Many people do very difficult practices like japas, tapas and ashtang yoga, and despite that they are not able to get control on their mind. क्योंकि मन को लज्जत चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। कहते जहाँ भी ये वस्तु मिलती है मन वहीं भाग जाता है। अगर मन को सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके वहाँ समा जाता है। वो क्या है? आपके अंदर अनहद वो सभी जो आठवें चक्र में झंकार दे रहा है। All these practices are not able to give control on the mind, because the mind is something that that runs to whatever fascinates it. It runs to whatever gives it that intoxication. So that is the only possibility is the sound current, the holy sound current which is resonating at the eye center. जब मन को शब्द की लज्जत मिल जाती है तो मन जाके शब्द में समा जाता है और उसको सोझी हो जाती है कि मैं ब्रह्म से आया है, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं ब्रह्म से आया है और अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। So when the mind comes in connection with the holy sound current, it realizes its true self. It realizes that it has come from Brahma, and it stops associating itself as the body or as the senses, and it realizes that its true home is the Brahma, and it has to go back. क्योंकि मन शब्द से जुड़ के पवित्र और निर्मल हो जाता है, ग्लास जैसे निर्मल हो जाता है। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप तक हो जाते हैं। इसीलिए मन निर्मल होने के बाद में दुनिया का चिंता अपने आप हट जाता है और वो जाके शब्द से जुड़ जाता है। उसको सोची होती है कि मैं ब्रह्म से आया हूँ, मेरा देश ब्रह्म है और अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। Once the mind gets connected with the sound current, it becomes crystal clear, it becomes transparent like glass, and the filth of so many karmas that it is carrying, all of those get redeemed immediately upon it getting connected with the holy sound current. कहते हैं कि फिर वो दुनिया को लात मार देता है, मोह सब खत्म हो जाते हैं और अपने देश ब्रह्म में जाने के लिए तैयार होता है और हमारी आत्मा को भी ऊपर जाने में मदद देता है।
the moment it gets connected and it becomes transparent, all the burden of karmas goes away, and the effect of Maya, the effect of all the attachments it has for this world, all that ceases, and it becomes ready to go back to its true home. It also helps the soul to transcend all that holy sound current and go up. धुन सुन कर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, करोड़ों साधन करके लोग थक गए, लेकिन बिगड़ा हुआ मन किसी के बस में नहीं आया और वो शांत नहीं हुआ। लेकिन संतों ने एक नया खोज निकाला, वो शब्द अंदर में प्रकट करने से शब्द इतना निर्मल है, पवित्र है, जिससे मिल करके ही मन निर्मल पवित्र हो जाता है और इसको सोझी होती है कि मैं ब्रह्म से आया हूँ। So Swamiji Maharaj says that people have tried umpteen number of methods or processes to try to get control or prowess on the mind, but they have not been able to do so. So the saints, they have devised a method, and they have made this process of getting the mind connected with the holy sound current. And when the mind gets connected with the sound current, it becomes pure instantly, and then it is ready to go back to its true home, and that is how we get control on the mind. तो कहते हैं जब तक कि मन निर्मल नहीं होगा, मन नहीं मानेगा, तो मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? बंध और मोक्ष का कारण मन है, आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है। So till we do not get that kind of control on the mind, there is no question of salvation, because the very impediment to salvation, the very impediment to getting freedom from this bondage in this world is the mind. And till the mind is not in control, there is no question of getting salvation or freedom from this bondage. आत्मा पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है। जो भी हम कर्म करते हैं, मन के दायरे में कर्म करते हैं, वो कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ते जाती है और मन मलिन होता है, आत्मा मलिन नहीं होती। The mind, the soul is of very pure essence. It is very pure. It has always been pure, and it will always remain pure. But it is tied up with the mind, and the mind is pulling it in the outwardly directions, and as a result, it is gaining the filth of karmas. And whatever filth of karmas it is gaining by doing various deeds in this world, it is that filth of karmas is getting, the mind is getting covered by that filth. The soul still remains pure. हाँ, तो कहते हैं कि इस तरह से मन निर्मल होते ही फिर वो हमारी आत्मा को भी, जो मन आज हमारा शत्रु है, हमें अंदर जाने से रोकता है, भक्ति करने नहीं देता है, जब शब्द प्रकट हो जाता है, मन निर्मल होता है, तो वही मन हमें ऊपर जाने में मदद करता है। So that same mind which is now laden with all filth of karmas and is not willing to go within, it is not helping the soul do its meditation. It is a big impediment to the soul going back to its true home. That same mind, when it gets connected with the holy sound current, it becomes transparent, and all this burden of karmas is taken away from it. And as a result, it also becomes free, and it is willing to go home, and it is willing to help the soul to go back. कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई, जोगी जुक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। तो कहते हैं कि योगी प्राणायाम करके थक गए, उससे रिद्धि
गई उनके अंदर, लेकिन उनका मन उनके बस में नहीं आया। He says that yogis, they have done their pranayams, and as a result they have even gained mystical powers, but they have not been able to gain control on their mind. तो कहते हैं कि मन बस में नहीं आने से एक दूसरे को आशीर्वाद और श्राप देते हुए घूमते हैं और अपनी कमाई बर्बाद करते हैं। So as a result, since they are under the control or influence of the mind, they either they curse people or they give boons to people, and that is how they waste their life. जोगी युक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, तपसी तप करता करे, जति रहे जतलाई। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज, कुछ लोग पठन पाठन से मन को बस में करने की कोशिश किया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का पाठ कर लिया और उसको याद कर लिया कि शायद उससे हमारा मन बस में आ जाए, लेकिन वो मन पठन पाठन से मन बस में नहीं आता। Then Swamiji Maharaj says that there are others, the learned types, who have memorized the 4 Vedas, the 6 Shastras and the 18 Puranas, and by memorizing all these, they feel that they have gained control on their mind. But by reading, one cannot get control on the mind. कहते यदि लोग सोचते हैं कि हम बाल बच्चे मिले के मालिक से नहीं मिल सकते, भक्ति नहीं कर सकते, उन्होंने वैराग्य धारण किया, घर मकान छोड़ा, जंगलों पहाड़ों में जाके झोपड़ी बना के और वहाँ प्राणायाम के जरिए मन को बस में करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी उसमें सफलता नहीं पा सके। Then he says there are the ascetics who believe that they cannot manifest God Almighty by staying in the comfort of their homes. So they leave their homes and they go in the mountains and they go in the forests, and there they go through all kinds of austerities and they do pranayams and they try to get control of their mind. But they also fail to do so. कहते हैं कि उसी में हमारे महाराज बाबा सोमनाथ महाराज भी थे, जिन्होंने 25-30 साल प्राणायाम साधन किया था नाथपंथ में। एक पहुंचे हुए फकीर माने सिद्ध शिरोमणि योगी थे, लेकिन अंदर शांति नहीं, क्योंकि मन बस में नहीं आता योगियों के। So among these ascetics, amongst these yatis, even Somnath Babaji can be counted as one, because he also did a lot of austerities, he did a lot of pranayams, and he also moved in various parts of India. And in fact, he was very successful in what he was doing, and he can be said to be a Shiromani, or he reached the epitome of that learning. क्योंकि मन ब्रह्म से आया हुआ है, ओंकार ब्रह्म से आया हुआ है, और योगी उसके ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए वो मन बस में नहीं आता है, और मन जो है इनको तकलीफ देता है। तो ऐसा रहने से ही बाबा जी ने और भी कोई काबिल मुर्शिद की तलाश में पूरा उत्तर इंडिया छान मारा, हिमालय छान मारा। आते समय ब्यास स्टेशन के पास में जब सामसिंह महाराज जी का पता मिला और वहाँ गए, सत्संग सुना तो जाके तसल्ली आई। He, with his practices, had gone up to the level of Brahma, but the mind is the essence of Brahma. So all the ascetics, all these practices, they do not give the powers to transcend the Brahma. The mind still remains, still has a influence over the person, because the Brahma is not, they have not gone beyond the Brahma. So even Somnath Babaji, though he had reached the level of Brahma, the mind was not in his control and he was not at peace.
And as a result, he continued to search for a greater master. And eventually, when he moved to the length and breadth of the country in the northern parts of India, at the Byas station, someone gave him the address of Ramsinghji Maharaj. And when he went and listened to the Satsang of Ramsinghji Maharaj, and he went there, he followed that practice. Only after that he was able to get control on his mind. बाबा विशनदास ने महाराज जय सिंह महाराज को भी 2 शब्द दिया था, जिससे उनकी रूह सहस्त्र कमल तक पहुंची थी। रिद्धियां सिद्धियां थी, लेकिन शांति नहीं थी। तो बाद में विशनदास महाराज ने कहा था कि अगर तुम्हें आगे का कोई गुरु मिलेगा तो तुम जरूर जाना और मुझे भी बताना। Baba Vishandas ji also had given initiation of 2 words, 2 names to Sanji, and Sanji had gone to the level of the 1000-petal lotus, and Vishandas ji had told him that if you get a master who can take you to the higher realms, then you also take me to such a master. तो जब उनको सामसिंह महाराज जी का सत्संग मिला और उनके बारे में पता चला, तो आप ब्यास जाने लगे। और फिर बाबा विशनदास जो एक अच्छे महात्मा थे, उस जमाने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में लंदन में जाके उन्होंने PhD किया था और राजवाड़े में पैदा हुए थे, लेकिन सब छोड़ करके जो फकीर हो गए थे, बड़े अच्छे कमाई वाले महात्मा थे। तो कहते हैं वो जब सामसिंह महाराज मिले तो उन्होंने उनके बारे में बताया और एक बार सामसिंह महाराज जी के पास भी लेके गए थे। So when Sanji got to know of Ramsinghji Maharaj, he started visiting Ramsinghji Maharaj, and he also took Vishandas ji there. Vishandas ji was a great Mahatma. He in those days was a doctor. He was a PhD and had gone to London to do his PhD. And he came from a very princely family. And he accompanied Sanji to Ramsinghji Maharaj. तो कहते हैं कि महात्मा कोई बंधन में बंधे नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि और भी आगे कोई रास्ता है और कोई भी महात्मा हमारे बच्चा है। तो जब सामसिंह महाराज जी से महाराज ने प्रार्थना किया नाम दान के लिए, तो सामसिंह महाराज की उम्र हो गई थी। वो कहते हैं कि बेटा तुमको नाम देने वाला तुम्हारे पास ही आके देगा। So when so Mahatmas are not bogged down by their limitations, they are always open to bigger ideas, or for them to learn bigger things and go to higher realms. So they are always open to that. And Sanji had also gone to Ramsinghji Maharaj, and Vishandas ji had also gone. But because of his age, Ramsinghji Maharaj had told Sanji that his master will come to him by himself. तो बाद में कृपाल सिंह महाराज जी जो है कि खुद चल के राजस्थान में जहाँ भजन बैठे थे वहाँ जाके नाम दान दिया। तो कहते हैं कि इस तरह से जब उनको कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिले तब जाके साथ दे आए। So then Kirpal Singh ji himself went to Sanji's place and he initiated him there, and that's how Sanji then got his peace of mind. So that is how one gets connected to the saints and their teachings. Then they are able to get that control on their mind and get that peace of mind. क्योंकि योगी लोग बहुत कुछ जाते हैं तो सहस्त्र कमल या ब्रह्म तक जाते हैं और मन भी ब्रह्म से ही आया है। वो स्थान मन का होने से उसके आगे तो जा नहीं सकते, इसीलिए मन बस में नहीं आता है और मन उनको बहुत सताता है, और इसीलिए उनको शांति नहीं होने से। हालांकि कुछ लोग को रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, लेकिन जो सच्ची आत्माएं होती हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प होती है, वो उससे खुश नहीं होते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
So when the yogis do their practices, they are at best able to go up to the 8th plane, up to the Sahasdal Kamal, or if they do more practice, they are able to reach the Brahma. But the mind is the essence of Brahma, so they are not able to transcend beyond the mind, and they remain within the realm of the mind. So many yogis are happy in this situation because they gain mystical powers, but the true followers, the true people who want to manifest God Almighty, they know that there is a limitation of Brahma, and they are always in the lookout for some master who can take them beyond. तपसी तप कर था करे जती रहे जतलाई ध्यानी ध्यान मानसी लावे वह बीजों का खाई। तो वही करते हैं, कुछ लोग मानसिक ध्यान करते हैं, जो रामानंद का मत था। मानसिक पूजा बंद से कहने मतलब फोटो वीटो आगे नहीं रहता है, कल्पना से मन में ध्यान बैठ जाते हैं। कल्पना करके राम लक्ष्मण सीता को अंदर बिठाना, उनको स्नान कराना, कपड़ा पहनाना, गल तिलक लगाना, ये सब कल्पना है, उसको मानसिक ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग मानसिक ध्यान द्वारा, मानसिक पूजा द्वारा मन को बस में करने की कोशिश किया, लेकिन वो मन के अंदर का साधन होने से मन बस में नहीं आता। Some people do the practice of contemplation. They do the puja by contemplation. So whatever offerings one does for deities outwardly, that is done by contemplation. So there is no idol or there is no photograph which is where the offerings are made. Everything is done in the mind. One contemplates on Lord Ram or Vishnu or Shiva, and within only then they are bathed, their ornaments are put, and people make all offerings in the mind only. So everything is by the contemplation within. It is the kind of practice that Ramanandji used to do in Varanasi. ध्यानी ध्यान मानसी लावे वह बीदों का खाई पंडित पढ़ पढ़ वेद बकाने विद्या बल सब जाई। तो ये कहते हैं कि पंडित लोग वेद शास्त्र का आधार लिया और पढ़ के जो है कि दूसरे को सुना के खुश होते थे, मुक्ति का साधन समझते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये पढ़ना लिखना ये सब मुक्ति का साधन नहीं हो सकता, अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब हमारी कोई चढ़ाई करती है तो हमारा जबान बंद हो जाता है, हम कैसे पढ़ेंगे, और बुद्धि लय हो जाती है, उसके बाद अनुभव स्टार्ट होता है। तो जब हम इसके हमारा जो जबान ही बंद हो गई तो पढ़ना लिखना तो कहाँ रह गया, तो कहते वो किसी तरफ के नहीं होते। So then there are the Pandits who believe that salvation lies in the knowledge and understanding or reading of the scriptures, the Vedas, and they believe that they read all this and as a result they will get this salvation by explaining this to others. But that is also not, that will also not get them salvation, just like the other practices. Because when one goes within, even at the 10th door, the intellect ceases. So the tongue and talking ceases and the intellect ceases. So where there is no intellect and there is no tongue to talk, there is no question of reading or any utterances or any knowledge that is gained from any books. So it is beyond the intellect only that the path of salvation starts. पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने
विद्या बल सब जाई, बुद्धि चतुरता का मन आवे, अलिम रहे पछताई। तो यार स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि और चतुरता ये कोई काम नहीं आता है, पढ़ना लिखना भी कोई हमारी आगे मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए जो आलम रहे पछताई, जो पढ़े लिखे लोग माने कि पठन पाठन के पीछे मुक्ति का साधन सोच रहे थे, उनको भी अंततः में पश्चाताप करके जाना पड़ा। So then Swamiji Maharaj says that the intellectuals who believe in the knowledge that is derived from their intellect by reading, writing or understanding the various books, all that again is not going to get them that salvation. कहते हैं पढ़ना लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहाँ तक पढ़ना लिखना चाहिए? हमें कोई मत की जानकारी के लिए, अगर हम संत मत की किताब पढ़ते हैं तो संत मत की जानकारी के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं सोचना पढ़ना लिखना ही हमारी मुक्ति देगा। तो कहते हैं उसके आगे साधन से जुड़ना चाहिए। जब संत मत की पूरी जानकारी हो जाती है तो साधन से जुड़ना चाहिए। संत मत में साधन में Reading of holy books, scriptures or reading about the Sant Path, there is nothing wrong in reading. In fact, that is the first step for understanding the path. So one has to read to understand, but the limitation should be there for that understanding. When one has understood what is being said there in the books, thereafter one has to move to doing practice. So one cannot just believe that only by reading again and again he is going to get salvation. बुद्धि चतुरता का मन आवे, अलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अलम शब्द लोलाई। तो ये स्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ पे और विद्या का कोई दखल नहीं है, एक ही विद्या है कि शुद्ध को शब्द के साथ जोड़ना, शब्द के जरिए ऊपर चढ़ाई करना। वो शब्द जो सतलोक सत्संग से आके यहाँ टिका हुआ है, दुनकार दे रहा है, आपको अंदर बुला रहा है। अगर वो शब्द से अपने आत्मा को जोड़ दे तो आत्मा वही शब्द ही ऊपर लेके जाता है, वो परमात्मा के स्थान से आ रहा है और हमें वहां लेके जाता है। So Swamiji Maharaj says that education and intelligence, there is no indulgence of these in spirituality. The only thing that one has to do is to connect the soul to the holy sound current. Once the soul is connected to the holy sound current, it goes back to where the sound current has emanated from, and that has come from God Almighty, and it will take back the soul to God Almighty. कहते हो शब्द बहुत निर्मल है और आत्मा और मन शब्द से जुड़ के निर्मल हो जाते हैं और फिर वो शब्द के जरिए ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होता है तो ये चढ़ाई भी नहीं कर सकता। That holy sound current is very pure, and till the mind also becomes as pure, it will not be able to merge in that sound current and go within. कहते हैं ना वो नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। वो नाम पारस के समान है और जो मन है वो मैले लोहे के समान है। जैसे पारस लोहे से स्पर्श हो जाता है तो सोना बन जाता है, ऐसा ही हमारे मन से जब वो नाम शब्द प्रकट मान्य हो जाता है तो मन भी एकदम निर्मल पवित्र हो जाता है। So he says that the sound current is very pure. It is like the philosopher's stone. When it gets connected to the mind, then the mind also becomes very transparent.
It is like a philosopher's stone. When it gets connected to iron, it converts that iron into gold. So like that, this mind is laden with all its karmas and is covered in all that filth. When it comes in the connection of that holy sound current and that pure sound current, it also sheds off all its attachments, it sheds off all its load of karmas, and it becomes transparent and merges with that sound current. तो कहते इस तरह से मन निर्मल होके उसके अंदर जो दुनियावी प्रेम है, मोह है, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मन निर्मल पवित्र हो जाता है और मन को अपने देश की याद आ जाती है जब वो सबसे जुड़ता है कि मैं ब्रह्म से आया हूँ, मैं ये देश मेरा देश नहीं है, और वो अपने देश जाने के लिए तैयार होता है। अगर वो निर्मल नहीं होता तो ऊपर जा नहीं सकता। So when that mind becomes pure, when it gets connected with the sound current, all its attachments for this world, all the influences of Maya, all that come to an end. And it realizes that it is indeed not this body or the senses, and it is an essence of Brahma. And then it is willing to go within. And then it merges with the sound current and goes up. Till the mind becomes as pure, it will not be able to go upwards with the sound current. और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, गुरु मिले जब दुन का बेदी, शीश गिरधर आई। तो वही कहते हैं कि जब गुरु शब्द का भेद बताने वाले गुरु मिले, हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ दें, और शिष्य कैसा हो, विरह कर आई, शिष्य के अंदर मालिक से मिलने की तड़प हो कि ये जन्म मुझे मुक्ति के लिए मिला है, ये जन्म में हमें ये भवसागर पार होना है, और उसके अंदर मालिक से मिलने की तड़प हो, विरह हो। अगर ऐसा शिष्य और ऐसा पूरा गुरु मिल जाए तो काम बनने में कोई देरी नहीं, थोड़े महीने में ही काम हो जाता है, उसकी रूह चढ़ाई कर जाते हैं। So Swamiji Maharaj says that for this possibility to happen, on the one side there has to be a master who is aware of aware of this path and aware of all of the secrets of this path. And on the other side, there is need of a disciple who has that pangs of separation from God Almighty, who feels that in this life itself, he has to manifest God Almighty. When such a master and such a disciple meet, then it doesn't take long for that disciple to go within and manifest God Almighty. अगर गुरु पूरा मिला, उन्होंने शब्द भेद दे दिया और शिष्य ने मालिक से मिलने की विरह नहीं, तड़प नहीं, वो रात दिन दुनिया से जुड़ा है और उसके अंदर दुनिया की आशा तृष्णा है, तो फिर ऐसे कामयाबी नहीं मिल पाती। So where there is a master and he has explained everything to the disciple, but the disciple doesn't have that feeling of going inwards, or doesn't have that kinds of separation from God Almighty, and instead he has all his desires and wishes for all the materiality of this world outside, then that disciple is also not going to be successful. क्योंकि महाराज उदाहरण देते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक सिख माने एक किसान आया जो खेती करता था, उसको भी शौक आया कि मैं भी थोड़ा दिन गुरु सेवा में जाऊं। Sanji used to say this, relate this story, that in Guru Nanak's time there was a farmer who came to Guru Nanak Sahib, and he felt that he should, Guru Gobind Singh, and he felt that he should also do some seva. तो
वो भी आया गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में, आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है गुरुदेव से कि महाराज मेरे पास बुद्धि ज्ञान दिमाग कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ और किसान का काम किया हूँ, तो आप मेरे शरीर की तरफ मेरे बुद्धि की तरफ देख के कोई काम सेवा देते। So he pleaded with Guru Gobind Sahib that I am a farmer and I have limited skills of whatever I do on the farmland. So looking at my skills, if you can designate a particular seva which I can fulfill successfully. तो महाराज ने देखा ये किसान है और किसान लोग जानवरों का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो महाराज ने अपना घोड़ा जो हमेशा सत्संग के लिए जाते थे, अभी आजकल लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने उस घोड़े की सेवा उनको दे दिया। So Guru Gobind Sahib felt that okay, farmers they take good care of their animals and cattle and horses, so he gave his own steed, he gave his own horse to be taken care of by that farmer. अब वो पहले से ही किसान आदमी, उसको रोज स्नान कराना, ब्रश मारना और टाइम टाइम से हरा चारा काट के ला के डालना और ऊपर से चना भिगा के खिलाना और श्रद्धा से काम करने से क्या हो गया, घोड़ा थोड़े ही दिन में 15-20 दिन में और तैयार हो गया, घोड़ा तंदुरुस्त हो गया। So it was a time of war in those days, and the farmer he started looking after that horse, and like a farmer he took good care of that horse. He would brush the horse and bathe the horse regularly. He would cut green grass and give it good feed, and he would also soak gram in water and give that also to eat to that horse. So as a result, in a few days, that horse became more healthy and it became stronger. तो गुरुदेव उनकी सेवा से बड़े खुश हुए, तो बोला बेटा तो कितना पढ़ा, कहता महाराज मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो बोलते अच्छा मैं आपको कुछ तुक बताऊंगा, कुछ अच्छा बता के जाऊंगा, तो याद करना दिन भर, और जब तुझे याद हो जाएगा तो दूसरा तुक मांग लेना, मैं आगे का बता दूंगा। तो ऐसा चलने लग गया। So his Gurudev was very pleased with him, and he called him one day and he asked him as to how much he had studied. So the farmer told him that I have not studied anything. So Guru Gobind Sahib told him that okay, then I will give you a sentence or a statement every day and you memorize it. Once you have memorized it, I will give you the next. So that way you will start learning. तो फिर वो रोज जब उसको याद आ जाता तो जाके पूछता, महाराज 4-5 तुक बता देते, फिर वो सारा दिन उसी को याद करते बैठता, जब याद हो जाता तो फिर दूसरे दिन पूछता, ऐसा ऐसा उसकी पढ़ाई भी होने लगी। So that way he would go to Guru Gobind Sahib and take a few lines and then he would memorize those. So once those were memorized, he would go to the next few lines. Like that he started learning. एक बार अकस्मात महाराज को फोन आया कि लड़ाई बहुत जोर पे है और ऐसी जगह आपको आना चाहिए। तो महाराज जो है सवेरे जल्दी स्नान करके कपड़ा पहन के और नौकर को कहा घोड़ा सजाओ, घोड़े पे जो है जाके तलवार लेके अपना घोड़े को बैठ गए और ये बाहर गया था और वहाँ से उसको मालूम है कि महाराज 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं लड़ाई पे। तो वहाँ से भागा भागा आया और आके महाराज जी के सामने खड़ा होकर कहता, महाराज हमें कुछ दुख दे के जाओ। तो हंस के गोविंद साहब जी हंस के कहते हैं कि वाह भाई माला, न वक्त पछाने न पछाने बेला, माने एक ऐसा वक्त है मैं कैसे टाइम पे और तू दुख मांग रहा है। तो वो हंस के ये बोल के चले गए। So once it so happened that there was a war broke out and Guru Gobind Sahib was informed of it. So he asked for his horse to be prepared and with his sword and with all the other weapons etc.
he was ready to leave and he was at the gate leaving for war. And this person, he had gone out, he was not aware of all this. And when he returned, he saw Guru Gobind Singh Ji leaving, and he was told that he's going off for about 15 days. So at the gate, he asked Guru Gobind Singh to give him a few lines so that he could memorize, because for 15 days he would be gone. So Guru Gobind Singh told him that his name was Bala. So he told him that Bala, you don't know what is the context of time and what you are asking. So he said that you are asking me statements when I am preparing to go for war. भाई वाला ना पछाने वक्त ना पछाने बेला के चले गए। अब वो क्या सोचा, यही दुख दिया है महाराज ने और यही रटन करने लगा, क्योंकि उसका नाम ही बाला था। So Bala then, when Guru Gobind Singh told him, he said, "Wah bhai Bala, na pachane waqt, na pachane bela," which means that, oh Bala, you are not realizing what time it is and what you are asking. You are not seeing the relevance of time here. So he said that and went for war. But Bela thought that this is a line which his master has asked him to memorize. So he started memorizing that line. और 15 दिन उसको घोड़े का सेवा भी नहीं था और आराम से वही रटन करते बैठ गया। दिन रात रटन करने से आँख बंद करके वही सोचू महाराज ने दुख दिया है और उसी को याद करते आँख बंद करके सोरम करने से 15 दिन में उसकी रूह चढ़ाई कर गई और उसकी तीसरी आँख खुल गई, अंदर गुरु प्रकट हो गया। अब वो जो बोले वो होने लग गया। Now as a result, he started memorizing that, and since he had no active duty because the horse was gone, he sat, closed his eyes and was memorizing that line which Guru Gobind Singh Ji had mentioned. So he kept memorizing that and he closed his eyes and started memorizing. Now as a result, his attention, in 15 days, the attention of his soul also withdrew inside and his third eye opened with that line which he was repeating. And he manifested the radiant form of his master within. तो बाद में जो और भी मुखिया लोग थे, बहुत दिन से पड़े हुए थे और भी आगे महाराज का भी सेवा किए हुए लोग कुछ लोग थे, वो लोगों के अंदर द्वेष पैदा हो गया, पुराने लोग सेवादारों के अंदर, कि देखो हम इतने बरस से उनके दादा गुरु के समय से हम सेवा में हैं और महाराज ने हमारे जैसे लोगों के ऊपर दया नहीं किया। कल परसों एक अनपढ़ किसान जिसको दिमाग है नहीं, वो कल परसों आया और उसके ऊपर दया कर दिया, उसकी रूह चढ़ाई कर गई, वो जो बोलता हो रहा है व्यक्ति। So now as a result, whatever he was saying was started to happen. And others in the ashram noticed this, and all the senior sevadars in the ashram and people who had stayed there for many years, and those who had even seen 3 generations of saints, all of them started feeling and they complained to Guru Gobind Singh when he came back, saying that this is unfair. We have been here in seva and we have been here for so many years, and yet our third eye is not open. But this illiterate farmer with no brains who has come here, you have graced him and you have opened his third eye. तो बाद में सब लोग ने मीटिंग करके बैठे कि आने दो महाराज, आते ही हम लोग पूछेंगे कि ऐसा क्या आपके यहाँ न्याय नहीं है, हम इतने बरस से सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर दया नहीं किया, एक अनपढ़ जट पे कल परसों आया उसके ऊपर दया कर दिया, आपके यहाँ न्याय नहीं है, पूछेंगे बोल के मीटिंग करे और लेके आपस में विचार करके बैठे थे। So they all assembled and all of them discussed this, and they felt that when Guru Gobind Singh Ji returns, they will all pose this question before him and they will ask him for justice.
बाद में जब महाराज जी आए तो एक दिन होने के बाद दूसरे दिन ये लोग मिलके गए और ये कंप्लेन किया कि महाराज हम लोग इतने बरस से 2 पीढ़ियों से सेवा में हैं और आप हम लोग के ऊपर दया नहीं किया। वो कल परसों आया भाई वाला, उसको दिमाग में नहीं अनपढ़ है, आप उसके ऊपर दया कर दिया, उसकी रूह चढ़ाई कर गई, वो जो बोलता होता है। So when Guru Gobind Singh Ji returned from the war, after a day or so they met him, all of them went together and they told him that there is no justice here. We have been in Seva and we have seen generations of saints here, and yet we have not been showered that grace which you have showered on an illiterate farmer. He has just come, in just a few days you have showered so much grace on him. So there is no justice here. हाँ, तो जब ये बात बोले गुरु गोविंद सिंह जी से, तो गोविंद सिंह बोलते अरे मैंने तो उसको अभी नाम भी नहीं दिया है, उसकी लोग कैसे चढ़ाई कर गई। तो बोलते नहीं महाराज, वो जो बोलता है हो रहा है, ऐसा है वैसा है, सब बोलने लगे तो समझ गए अरे कुछ गड़बड़ है। तो बाद में बोले अच्छा आप लोग कल आओ, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। So Guru Gobind Singh Ji told them that I have not even initiated him, so how is it that this has happened? But then they told him that no, whatever he is saying, everything is happening as he says, and they told him that he is gone within, he's manifested the form of the master. So Guru Gobind Singh then thought and he said that okay, I will think about this and we will meet tomorrow and I will work out a solution. तो महाराज ने भांग मंगवाया और उसमें जो डालते थे सौंफ गेहूं बादाम बादाम भांग में जो डालते हैं सामान सब मंगवाया और रात को भिगो के रखा और सवेरे क्योंकि भांग को जितना पीसते उतना नशा बढ़ता है तो उसको अच्छे लोग को 4 पहलवान को रख के पीसने को बोला भांग को। तो भांग को पीस के गुड़ डाल के एक हंडा पूरा बनाया, बड़ा हंडा, और भांग बना के सबको बड़ा बड़ा एक लोटा में भर के सबको एक लोटा दिया। बोला देखो इसको मुंह में डालना लेकिन गले के नीचे नहीं उतरना, ध्यान रखना, मुंह में डालना और थूक देना तो ऐसा ही गले के नीचे नहीं जाना। तो सब लोगों ने ऐसा ही किया और पूरा हंडा खाली हो गया। तो महाराज बोलते हैं क्यों तुम्हें कुछ नशा आया? तो कहते महाराज आप बोला था गले के अंदर जाना नहीं, तो गले के अंदर गया नहीं तो नशा कैसे आएगा? तो बोले बस यही है तुम्हारी हालत है। बोले 12 को बुलाओ, 12 को बुलाए, क्या तो जपता है? वाह भाई 12 न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। अरे ये तो नाम नहीं है महाराज, आपके मुंह से जो निकला वही नाम है क्योंकि उसको विश्वास है तो उसके अंदर वही उसको फायदा मिल गया। विश्वास है जपने से, आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप ऊपर पीछे ये करके जपते हैं, अंदर तो विश्वास नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपके अंदर वो नाम कैसे प्रकट करेगा? क्योंकि अभी आपने इतना लोटा पिया, आपको नशा नहीं आया। तो कहते ऊपर पी के फेंक दिया और वो भांग नीचे गया ही नहीं तो नशा कैसे आएगा? तो ऐसे नाम आपके अंदर नहीं, ऊपर जाप करते हैं लेकिन वो नाम अंदर नहीं आया और अंदर नहीं वो प्रकट होने से तो आपको नशा कैसे आएगा नाम का? तो सब लोग चुप हो गए। So Guru Gobind Singh decided to explain to everybody and he called for bhang. Bhang is an intoxicant and so the preparation of bhang requires that the leaves of bhang are ground well, and once they become, the more grinding that is done on those, the higher is the level of intoxication. So that is mixed with a lot of other dry fruits and with milk, and
that drink is prepared. हाँ, So Guru Gobind Singh Ji prepared a large quantity of bhang in the night. He called two strong men to grind those leaves, and he prepared a large quantity of bhang. The next day he called everybody, and when all of them assembled there, he gave each one a jug of bhang, and he said that okay, now all of you take this bhang, but just make sure that you don't swallow it. You just rinse your mouth and you gargle and you throw it, but not a drop of it should go inside. So everyone did that, and after everyone's jug was empty, he asked them, okay, now do you feel the intoxication of that bhang? So everyone immediately replied that if we have not swallowed that bhang, how are we going to get intoxicated? So he says, exactly, that is your answer. Now call Bela. So they called Bela there. He said, Bela, what have you been doing? So Bela said, I have been repeating what you told me to repeat. So he said, okay, what have you been repeating? So Bela told him that I was repeating, Wa bhai Bela, na pachane wakat, na pachane Bela. So he said, see, he is not even initiated, but he has faith in his master. He has accepted it without any condition, and he is doing, forgetting everything else, he is doing single-mindedly that repetition of what is being told to him by the master. Now, whereas all of you for so many years have had jugfuls of preachings, all of you have also been here listening to everything that is being said, but you have not really internalized it, you have not swallowed it. You have just rinsed whatever is said to you by the master and you have spat it out. So how are you going to then imbibe that quality of Naam? How is Naam going to get manifested if you do not swallow it, if you do not internalize what the master is trying to tell you? हाँ, नाम जब बार बार जपते रहेंगे अंदर नहीं जाएगा, नाम प्रकट नहीं होगा तो नाम पर है। इसीलिए कहते हैं गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। दिल भीतर तो हम दुनिया को बैठा दिए और ऊपर ऊपर गुरु गुरु नाम को बंद करते हैं, अंदर वो नाम नहीं उतरता। So that is what happens. Inside in our hearts we have the whole world filled in it. But outwardly we are talking about praise, we praise our masters, we outwardly do some Simran, but inside our hearts we have the world filled there. So therefore in these conditions we will not be able to manifest that now. इसीलिए नाम अंदर नहीं प्रकट होता और हमें कोई फायदा नजर नहीं आता और हमारा समय लंबा चला जा रहा है। Therefore we are not seeing that benefit of the meditations. We are not, our time is elongating. It is taking more time to do the same thing. सुरत शब्द की होए कमाई, तब तब मन कुछ ठहराई, हिर्स हवस से हाथ न आवे, तन मन देव चढ़ाई। तो वही कहते हैं कि भाई जब सुर शब्द का अभ्यास प्रेम प्यार लेके करो तब जाके धीरे धीरे मन कुछ स्थिर होने लगता है। हिर्स हवस है यह मन नहीं माने, हम अंदर कोई राग द्वेष कपट ऐसी वैसी भावनाएं लेके अंदर रखेंगे और ऊपर से सुमरन करेंगे तो ये नाम प्रकट नहीं होता। So he says that you have to do your meditation and you have to have a pure mind to do it. If you have hatred, envy, jealousy and such things in your heart, then you will not be able to do that devotion wholeheartedly. इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए, अपने मन को निर्मल और पवित्र रखना चाहिए। किसी के प्रति कोई द्वेष, किसी के प्रति कोई कपट भाव या जलस नहीं रखना चाहिए। सबसे प्रेम और प्यार रखना, हमारा भावना हमारा हृदय साफ रहे
So we should try to keep our hearts clean. We should not carry jealousy towards others or hatred towards others, or try to have some ill will, or try to be sly and mislead others. We should have a pure heart, and only then we will be able to imbibe what the Master is saying and work towards that. कबीर साहब ने कहा है, जो तो को कांटा बोए वायु बोल तो फूल, स्वयं फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा डालता है तो तुम उसके रास्ते में कांटा डालने की कोशिश मत करो, तुम उसके रास्ते में फूल डालो। So masters say that if someone is trying to sow thorns on your path, you don't try to do the same. You don't try to sow thorns on his path. Instead, you shower flowers on his path. जैसे तुम्हें फूल का फूल रहेगा, आपका दिल साफ है, सुथरा है, तो गुरु आपको ज्यादा इनाम देगा और मालिक आपको ज्यादा उस पर ये दया करेगा, और आप भी उसके जैसे हो गए तो उसमें कोई फर्क नहीं, दुनियादार में और सत्संगी में कोई फर्क नहीं। Because by doing so, you will have flowers in your heart, and then your Master and God Almighty will shower their grace on you. If you start behaving like the worldly person behaves, then there is no difference between you and or between a satsangi and a worldly person. तो इसीलिए अपने दिल की मन की सफाई बहुत जरूरी है, और मन हमेशा साफ सुथरा रखो, जिससे मालिक की दया में हर वहाँ टिक सके। Therefore, keep your mind clean, and if that is clean, then you will be able to absorb or assimilate that grace which the Master is showering upon you. बुलवसिया और कपटी जन को नेकन धुन पतियाई, यह धुन है दूर लोक दर की, कोई पकड़े संत सिपाही। तो वही कहते हैं कि जो डरपोक होते हैं, जो थोड़ा सा डर जिसके अंदर भरा रहता है, डरपोक होते हैं, वो ये रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें हिम्मत की जरूरत है, और तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, सब सहन करते हुए भक्ति मार्ग में चलने वाले को ये फायदा मिलता है। और डर के भक्ति करने से हम ये चीजें हमें हासिल नहीं हो पाती। Swamiji Maharaj says that this is not the path for cowards. If this is a path of bravery, we have to withstand all aspects of life which come, and we have to face all the ups and downs in life and remain steadfast on this path, which requires bravery. So it is not the path of cowards who do this with a very weak heart. वो क्या करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ऐसा भावना लेके चलने वाले को संत मत में कोई फायदा नहीं मिलता है। जो दृढ़ संकल्प है और जो कि भावना जिनकी निर्भय है, ऐसे लोग ही चाहे तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, 3-4 घंटे की बैठक बना के गुरु को अंदर प्रकट करने की कोशिश करें। So you have to do this bravely and with commitment and faith. Those who do it with such bravery and with faith, they will meditate for 3 to 4 hours. Whatever they are facing, however difficult life is for them, they will make it a point to sit for their meditation because they are committed to do that, and they will have faith in their Master. It is not for those people who will procrastinate, who will do a little bit now, a little bit later, who will push it for the next day or the next month. It is not for those kind of people. इसीलिए कहते हैं कि इसमें हिम्मती लोगों का काम है, जो काम कल करना वो आज करना, जो आज करना वो अभी करना, कल के ऊपर नहीं डालना, क्यों कल काल के हाथ में। So one should not procrastinate on this path. It is not whatever you are going to do tomorrow, you should do today, and whatever you are doing today, you should do now. Because if
you procrastinate for tomorrow and then the day after, then that future is in the hand of God, it is not in your hands. मन को मार करे असवारी, गगन कोट वाले वगिराई, खाई सुन पार मैदाना, मासून काना का परिमाना। तो कहते हैं ऐसे बहादुर लोग अपने तकलीफ की तरफ ख्याल नहीं करते, खाने पीने का ध्यान नहीं देते, सोने का भी ध्यान नहीं देते और रात दिन उस गुरु के लिए तड़पते रहते हैं, तड़प विरह में रहते हैं कि वो मालिक कब मिलेगा, कब दर्शन देगा। कहते हैं ऐसे हिम्मती और रात दिन अपने सुख का त्याग करते हैं, दुनिया का भी त्याग कर देते हैं जब तक कि गुरु अंदर प्रकट नहीं होता। So he says that those brave devotees who do not care about the difficulties that they are facing, who spend time in their devotion and who are steadfast in the faith of their master, who have that pangs of separation from the master, and they are always waiting to manifest the master and working towards that. They sacrifice they don't bother about the food, they don't bother about sleep, and they don't bother about other difficulties, but instead they just remain focused in their devotion, in their meditation. Such people will be successful on the path. तो कहते हैं इसीलिए कठिन है संत मत कि गुरु के हुक्म का पालन और लगन, गुरु से मिलने की तड़प होवे। जब ऐसा काबिल मुर्शिद मिल जाए और हमारे अंदर तड़प होवे तो ये रास्ता बहुत नजदीक हो जाता है और कामयाबी जल्दी मिल जाती है। So Santpat is not an easy path, it is a path for the brave, and therefore he says that when one has a true master and one is a true disciple, he is committed and he has faith in the master and he makes that effort, then that devotion will bear fruit in a very short time. It will not take a long time for his devotion to bear fruit. जो भी संस्कारी आत्माएं गुरुमुख आए, एक बार गुरु के शरण में गए तो उन्होंने अपना सब कुछ गुरु को देके गुरु का बन गए और उनके हुक्म पे चलने लगे, चाहे लाख मुसीबत आए, तकलीफें आए, दुनिया लूटे या तो उनकी जान जाने की भी नौबत आ जाए तो भी वो अपने भक्ति से दूर नहीं होते। So people have seen saints, they have seen people with past impressions. When they come in the company of a master, then they leave everything, all their belongings aside, they don't even bother about their life. They leave everything, sacrifice everything, and are very committed, and they have steadfast effort. They are committed and they make effort and their devotion to manifest their master. और हम तो प्रेम प्यार गुरु से जरूर बार बार करते हैं, लेकिन अंदर दुनिया को बिठा के रखते हैं। अंदर में हमारा सारा प्रेम प्यार दुनिया से जुड़ा होता है और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या तो अपना कोई साथी साथ छोड़ के चला जाए तो हम तुरंत भक्ति से दूर होने की कोशिश करते हैं कि गुरु ने हमारी उनकी रक्षा नहीं किया। When we also have love and affection for our masters, time and again we also express that love and affection for the master, but in our heart we have the world, and many a times when we face difficulties in life, or if a dear one passes away, then we blame the master, we leave the path, we say that the master did not protect our dear one and therefore he passed away. क्योंकि आपने अभी संत मत कोई नहीं समझा है, संत मत सुनने में जितना सरल है चलने में उतना ही कठिन है। हमने अभी संत मत कोई नहीं समझा और इसीलिए हमारी ये हालत होती है कि हम दुनिया के लिए रोते हैं लेकिन गुरु के लिए नहीं रोते। We have not understood Santmat. Santmat is
is a apparently very easy path, but it is a very difficult path to follow. And we have not understood Satmat. We are crying for the world. We have to cry for the master. आपने देखा भाई मंज 100 एकड़ के मालिक थे, बहुत बड़ा कुटुंब था, लेकिन एक सेवा में जब गुरु ने उनकी परीक्षा चालू किया, जानवर मरने लग गए, कुटुंब परिवार के लोग मरने लग गए, सैकड़ों एकड़ जमीन चली गई, लेकिन उनका मन नहीं हिला। उन्होंने एक गुरु के प्रति कोई एक छोटा सा भी संकल्प नहीं आने दिया मन में, और ऐसे ही पहाड़ जैसे खड़े रहे। यहाँ तक कि देखो बाद में जो है कि अंग और अर्जुन देव ने और भी बहुत बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन उनका दिल दबाडोल नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने गुरु को सब कुछ मान लिया। तो ऐसा कोई हिम्मत वाला बहादुर लोग ही ये संतमत में गुरु की कृपा हासिल कर देते हैं, नहीं तो कमजोर दिल के लोग जो दुनिया को दिल दे बैठे हैं, वो लोगों के अंदर भक्ति कहाँ से होगी? You see the example of Bhai Manj, and Bhai Manj had so many hundreds of acres, and he had such a large family. But when his master tested him, and he followed Guru Arjan Dev Ji, and a number of his family members died, a lot of his cattle stock died, and he lost his entire land holding. But he stood like a mountain. He was steadfast on his devotion like a mountain, and he had full faith in his master. Even after all of this suffering, Guru Arjan Dev Ji continued to test him, but he remained steadfast, and not a single time did he have any doubt in his mind, or he had any ill will or anything untoward that he thought about his master. He was very resolved in his faith in his master. So like that, this path is for the brave. It is for those people who have that steadfast love and devotion for the master. And if we are not successful because we are not able to have to continue that bravely. We are weak-minded because we carry the world in our hearts, and at the slightest problem we are willing to drop everything else. और उन्होंने गुरु अर्जुन देव की दया प्राप्त किया, उनके रूप को सीधा सतलोक लेके गए, और वो सीधा संत महात्मा बन गए, खाली तो परीक्षा पे पास होके और सेवा करके। So Bhai Manj also got the grace of his master. He was able to absorb the grace of his master, and with that seva alone, he was taken to Sachkhand by his master. इसीलिए चाहिए कि हम अपने दिल को पुख्ता करें, मजबूत करें, और दिल को हमेशा साफ रखें, ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली, कहते ना किसी से दोस्ती करो, ना किसी से द्वेष रखो, सबसे प्रेम और प्यार करो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। Therefore, remain steadfast and remain brave on this path. Don't keep your heart clean. Do not have any ill feelings or any other kind of jealousy or malice in your mind, in your heart or mind, and keep that free, keep that clean to absorb the grace of the master. क्योंकि आपका अगर कोई है एक गुरु है, और दुनिया के लोग तो 4 दिन के आपके साथी हैं, जब तक आप शरीर में हैं तब तक के हैं, लेकिन गुरु यहाँ और मरने के बाद वहाँ भी साथ निभाता है, और सतलोक सचखंड तक परमात्मा का दर्शन कराने तक आपका पल्ला नहीं छोड़ता है। तो ऐसे से प्रेम का प्यार करो, जो यहाँ मरने के बाद वहाँ साथ में है। So in your heart you have love and affection for all. In your heart don't have enmity with anyone and don't have great friendship with anyone. Look at everyone equally and have love and affection for all. Have true love and affection for the master, because he is one true friend of yours who is going to help you in this world. He is going to help you at the time of death, and he is also going to help you go back to your true home, go back to God Almighty.
कहते इस तरह का प्रेम प्यार लेके गुरु से आप भजन सुमरन करोगे, जो गुरु कहीं दूर नहीं, वो जैसे नामदान दिया आपके अंदर ही बैठा है, वो जरूर दरवाजा खोल देगा और आपकी रूह मंडल वायुमंडल चढ़ाई करते हुए महासन पहुंच जाएगी। So like that, if you have true love for your master, he is not far away, he is sitting right inside you. After having initiated you, he is very much within you. And if you have a clean heart and you are able to meditate upon him bravely, then he will definitely shower his grace and your soul will transcend to the higher planes. Plane by plane, you will be able to go further inside. गोर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई, अद्भुत लीला जब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई। तो वही कहते हैं कि इस तरह से रोज चढ़ाई करते हुए गौर को पास सब लोग दर्शन गए और शीश महल जहाँ सतपुरुष रहता है, वो शीश महल बहुत सुंदर जगह है, अमृत की बरसात होती रहती है और आत्मा वहाँ पे जाके अमर हो जाती है, कुल मालिक बन जाती है। वहाँ से उसको 16 लोग नीचे दिखाई देता है और आत्मा बड़ी खुश हो जाती है। So that way the soul will go to Sun and from there it will go to Bhavar Gufa, the gate of Sachkhand, and there in the glass house of Sachkhand you will see God Almighty, and from there, which is 16 planes above, you will see for yourself everything around you and all of this world is around you. सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्रन चंद्र कोटि नच बिचाई, घट आकाश अवघट प्रकाशा, लख आकाश कोटि न परसाई। तो वह कहते हैं कि करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा एक ही दफा उगेंगे, कितना प्रकाश होगा, सत्पुरुष के एक एक रोम से निकलते रहता है और वहां से आपको लाख लाख आकाश और लाख लाख सब ये दुनिया दिखाई देती है वहां से नीचे तक। हाँ, बहुत सारे मंडल है, खाली ये 16 लोग के नहीं है और बीच बीच में बहुत सारे मंडल हैं और वहां से सब दिखाई देता है। So when you will take the darshan of God Almighty, hundreds of millions of suns and hundreds of millions of moons will give their luminance from each cell of Him, and from there you will see hundreds of thousands of different skies and worlds. It is not just the 16 planes. There are so many uncountable skies and uncountable worlds which you will be able to see from there. घट आकाश अवघट प्रकाशा, लख आकाश कोटि न परसाई, यह लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरु मुख पाई। तो वे कहते हैं कि ये लीला बहुत अजीब है और गजब है, उलट पलट करके अपने ख्याल को उल्टा करके कोई गुरुमुख ऊपर जाके ये अनुभव अपने अंदर कर देखता है और ये लीला बड़ी गजब है, जो देखेगा उसी के अनुभव में आएगा। So he says that this entire creation of God Almighty is so amazing and so unique that only a person who is able to invert his thought, to be able to invert it and then follow the instructions of his master and go within, only such a person will be able to go in and see this amazing creation of God Almighty. काल गबरनु वेद
कहते हैं कि जैसे गुग्गे को गुड़ खिला दो, मिठाई खिला दो और पूछो कैसा है, तो बोलने के लिए उसके पास जवाब नहीं, वो खाली हंसता है। तो कहते हैं ऐसा ही वो देश है, उसको कोई बयान से परे है, वो बयान करने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं दुनिया में जिसका उदाहरण देके समझा। So then he says that it is so amazing that it is like if a dumb person, a person who cannot talk, if he is given jaggery and he is asked to explain the taste of jaggery, he will not be able to explain it. So the creation of God Almighty is like that. It is impossible to explain that. अकत हक की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को, प्रगट कर सरसाई। तो इन सबको समझा के स्वामी जी महाराज कहते हैं गुप्त राज को खुलासा करके बताया गया, ये सब आपके अंदर है, लेकिन आप जो अपने दिल को साफ रखोगे, अपने दिल में कोई दोष मत आने तो दिल को साफ रखो और भजन सुमरन करो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। So Swamiji Maharaj says that I have explained to you about the inner truths, and I have explained these to you, and only one who is able to keep his heart clean and go within with faith and with a steadfast faith, he goes within. Only he will be able to see inside for himself. अकत हक की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को, प्रगट कर सरसाई। राधा सतगुरु
With this, we come to the end of this program, and during this program, if any sevadar has hurt anyone's feelings, then we ask for forgiveness for that sevadar. So any such thoughts may not be taken back home, and forgiveness may be given to that sevadar. All of you should go. So all of you have participated in this program with love and affection, and all of you should carry the same love and affection when you go back home, and make it a practice to sit for meditation for 2.5 hours every day without fail, and listen to satsang. So every day try to listen to at least 20 minutes of satsang and do about 2.5 hours of meditation.